Hello everyone, welcome to Marketing Academy. In this session, we are going to see the DI set based on line graph from Z22. Okay, so let's look at the direction set. The enrollment of students in thousands at each of the five universities named MPU, JSU, LTU, PKU, and TRU during each of the 8 years from 14 to 21 is represented in the following chart. So this chart is basically giving us the information of enrollment in these five universities. So these lines are representing the enrollment figures. Okay. The names of these universities are not shown in the chart. Instead, they are labeled as University 1 to 5. So university का नाम mention नहीं है. That means which line is representing which university, we don't know. Instead, they are labeled as University 1 to University 5. So if I look at the chart properly, so this y-axis is representing the enrollments in thousands, and this x-axis is representing years. Okay, this x-axis is representing years in which enrollment took place. So for example, in 2014, this university, this circle, so this circle is represented by University 3. So if I take this as University 3, so University 3 has enrollment of 500 students in 2014. Okay, so it is clearly given that these lines are representing the universities. Okay, but which university we don't know. Instead, they are labeled from 1 to 5. So University 3, this first line which is having circles, so this is University 3, okay, and this second line represented with star is University 2. This triangle line is University 1. This rhombus shaped line is University 4, and this square shaped is University 5. Okay, so these are the lines which are representing enrollment. Now we have to find which line is representing which particular university. वो उसके लिए अपन को we have the clues. So these four pieces of information are available. This information will help us to identify the university represented by these lines. So let's look at this. The magnitude. Now first clue is the magnitude of TRU's and MPU's net change in enrollment from 14 to 21 are the closest among any two universities. Now what W clue is saying that कि net change जो enrollment है 14 से 21 का किसका TRU और MPU यूनिवर्सिटी का वो बहुत क्लोजेस्ट है मैग्नीट्यूड में. ठीक है, सो मैग्नीट्यूड जो भी है वो बहुत क्लोज है नेट चेंज का एनरोलमेंट का MPU और TRU यूनिवर्सिटी का. So let's look at the net change first. If I look at the University 5, enrollment is 6.5 in 2014, and in 21 the enrollment is 3.2. Okay, so I'm taking one place of decimal. So 6.5 minus 3.2, so that will be 3.3. So that is the net change. Okay, so 3.3 is the net change from 14 to 21 of University 5. University 4 enrollment is 4, and it is something 4.2 in 21. So net change is 0.2. Okay. Next, University 1, that is 3.2, and it is going till 21 3.9. Okay, so the net change is 3.9 minus 3.2, that is 0.7. Next, University 2, that is 1.7, and it is going till 21. In 21 it is 6.2. So 6.2 minus 1.7. So that is 5.2. 5.2 minus 0.7, that is 4.5. So the net change in enrollment is 4.5. Next, University 3, that is starting with 0.5, and 21, that is 0.4. So net change is 0.1. Okay, we have to consider only magnitude. तो जो भी मैंने ये लिखा है बॉक्स के अंदर, these are the magnitude. Okay, net change in enrollment. So now we know that कि TRU और MPU यूनिवर्सिटी का जो enrollment है वो बहुत closest है. So let's observe the closest values. So if I look at these closest values, so closest values are University 3 and University 2, 0.1 and 0.2, which are very close. Okay, so that means 0.1 और 0.2. So that means ये जो
यूनिवर्सिटी 4 है वो या तो TRU है या फिर MPU है। सिमिलरली यूनिवर्सिटी 3 MPU है या TRU है। ठीक है, क्योंकि इनका जो नेट चेंज है वो बहुत क्लोज है। नाउ लेट्स लुक एट द एक्स क्लू। LTU had the same enrollment in consecutive years at least twice between 14 and 21। LTU यूनिवर्सिटी के जो एनरोलमेंट है वो सेम है, ठीक है, कंजिक्यूटिव ईयर्स में एंड बिटवीन 14 एंड 21। सो लेट्स लुक एट द लाइन प्रॉपरली, किस में एनरोलमेंट सेम है ना। इफ आई लुक एट द यूनिवर्सिटी 3, तो इसमें यूनिवर्सिटी 3 में वी कैन सी दैट 2015, 16 और 17 में एनरोलमेंट सेम है। But we know that University 3 can be MPU or TRU. It cannot be LTU, है ना। तो MPU या TRU होना चाहिए, LTU तो है ही नहीं University 3। So that means we have to look one other line which is having same enrollment. So if I look at this University 2, it is increasing gradually. So that cannot be LTU. University 1 में we can see that we have same enrollment in 14 and 15। सो दो कंजिक्यूटिव ईयर्स में सेम एनरोलमेंट है और अपन को बोला गया इट इज एटलीस्ट ट्वाइस। सो कंजिक्यूटिव ईयर्स में एनरोलमेंट दो बार हुआ है। सो नेक्स्ट आई कैन सी हेयर इन 2019 एंड 2020। तो 2019 और 20 में भी कंजिक्यूटिव ईयर्स में सेम एनरोलमेंट है। सो दैट मीन्स दिस इज डेफिनेटली LTU because no other university line is showing same enrollment in consecutive years. Now let's look at the Y clue. What is saying that the increase in JSU enrollment from 15 to 19 is about 50% of TRU's total enrollment in 20। Now TRU we know that या तो वो TRU यूनिवर्सिटी 4 है या यूनिवर्सिटी 3 है, ये अपन को पता है। लेकिन JSU जो है वो यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट 15 टू 19 में जो इंक्रीज हुआ है दैट इज 50% ऑफ TRU enrollment in 2020। So let's look at the remaining university lines. Look at the university 2। So 15 से अगर अपन देखें, so this is 15, okay, so this is 2.6, okay, and it is going till that is 5.1, okay, so that is 2.5, 2.6, and that is going in 2019, that is 5.1। Now if I look at the next is, that is यूनिवर्सिटी 5। सो यूनिवर्सिटी 5 कैनॉट बी JSU बिकॉज इसमें तो डिक्रीज हो रहा है, यहाँ पे अपन को इंक्रीज देखना है 15 से 19 में। सो आई विल नॉट चेक फॉर यूनिवर्सिटी 5। सो दैट मीन्स इफ आई लुक एट दिस यूनिवर्सिटी 2 में डिफरेंस जो है 5.1 माइनस 2.6, सो दैट इज द डिफरेंस ऑफ अप्रोक्सीमेटली 5 माइनस 2.5, दैट इज 2.5 अप्रोक्सीमेट डिफरेंस है, ओके। 5.1 माइनस 2.6 अपन करते हैं तो दैट इज 5 एंड 5 माइनस 3 इज 2.5, है ना। तो दैट मीन्स जो डिफरेंस है वो 2.5 है, बट वो क्या है 50% है। किसका 50% है? TRU के एनरोलमेंट का 2020 में। सो TRU अगर अपन देखें तो 22.5 इज 50%, सो दैट मीन्स टोटल विल बी 5, क्योंकि 5 का 50% 2.5 होता है। सो TRU में 20 में अगर अपन देखें तो TRU में यहाँ पे एनरोलमेंट कितना है, दैट इज पॉइंट 0.5, 0.6, 0.7 है, एंड यहाँ पे TRU का कितना है, वी कैन सी दैट TRU का यहाँ पे XAT 5 है। सो वी गॉट दिस इज 5 और 5 का 50% होता है 2.5, so that means this university 4 is definitely TRU, okay, and university 3 definitely MPU। So we are clear with the university 4 and 3, they are representing TRU and MPU respectively। University 1 का तो clear ही है LTU, and we know that this university 2 is JSU because increase 15 से 19 JSU में ही हो रहा है। So that means we are left with university 5 जो कि क्या होगी, this will be PKU। So that will be PKU university, है ना। So we got the इंफॉर्मेशन ऑफ यूनिवर्सिटीज, कौन सी लाइन किस यूनिवर्सिटी को रिप्रेजेंट कर रही है वो अपन का क्लियर हो गया फ्रॉम द W, X एंड Y क्लूज ओनली, ओके। नाउ इफ आई लुक एट द Z,
it is saying that the enrollment in one of LTU and PKU had a steady decline from 14 and 21, while the enrollment in the other had no decline between any two consecutive years in the same period. Okay. So enrollment in one of LTU and PKU. We know PKU is University 5, LTU is University 1, है ना? ये अपन को पता है. इनमें इसमें क्लियरली गिवन है कि एक का स्टडी डिक्लाइन है. सो वी कैन इजीली सी दैट PKU का स्टडी डिक्लाइन है. सो स्टडी डिक्लाइन किसका है? PKU का from 14 to 21. While the enrollment in the other, that means LTU, had no decline between any two consecutive years. So LTU का कोई भी डिक्लाइन नहीं होना चाहिए किसी भी दो consecutive years में. So if we look at the University 1, that is LTU, तो कांस्टेंट है 14 से 15 एनरोलमेंट, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ है, फिर ग्रेजुअली इंक्रीज हुआ, फिर इंक्रीज है, फिर कांस्टेंट है और इंक्रीज है. सो दैट मीन्स कुछ भी डिक्लाइन नहीं है. ओके, सो दैट मीन देयर इज नो डिक्लाइन. सो दैट मीन्स जो अपन ने डब्ल्यू एक्स और वाई से, जो डब्ल्यू एक्स और वाई के क्लू से जो अपन ने यूनिवर्सिटी आइडेंटिफाई की थी, वो बिल्कुल सही है, क्योंकि इट इज ऑल्सो मैचिंग दी जेड इंफॉर्मेशन. Okay, so that is this thing which we have to do in this particular set. बस यही करना था. Now the questions are very doable. Let's look at the question and answer the questions. First question is saying which of the five universities can University 4 possibly? Okay, so University 4. So we know that University 4 is TRU, है ना? क्योंकि MPU तो अपन ने देख लिया था, that is not the यूनिवर्सिटी. तो MPU तो यहाँ पे रिजेक्ट हो गया, यहाँ TRU रिजेक्ट हो गया. सो यूनिवर्सिटी 4 इज TRU ओनली, है ना? सो दैट इज ओनली TRU ऑप्शन सी. विच यूनिवर्सिटी एनरोलमेंट वाज अराउंड ट्वाइस दैट ऑफ LTU इन 14? किस यूनिवर्सिटी का एनरोलमेंट डबल था LTU से? जो 2014 में जो LTU का एनरोलमेंट था उससे डबल. सो LTU का एनरोलमेंट कितना है? LTU का एनरोलमेंट 2014 में है, दैट इज 3.2. ओके, तो किस यूनिवर्सिटी का इससे डबल है? तो इफ आई लुक एट दिस, तो दैट इज PKU का जस्ट डबल है ना? 3.2 का जस्ट डबल है. सो दैट मीन्स अप्रोक्सीमेटली डबल है. ठीक है, सो दैट इज PKU. तो 14 में PKU का एनरोलमेंट LTU से डबल है, PKU का. सो दैट मीन्स आंसर इज ऑप्शन ए, ओनली PKU. ठीक है. Now, next last question. Which amongst the pieces of information mentioned below, if removed, will not prevent us from uniquely identify the five university? So they are saying that इनमें से कौन सा क्लू, अपन को X, Y, Z, W क्लूज गिवन थे, इनमें से अपन कौन सा क्लू अगर एलिमिनेट रिमूव कर दें, so it will not prevent us from uniquely identify the universities. So अपन ने देखा था यहाँ पे कि जब W, X और Y पे अपन ने क्लूज पे काम किया था, सो WXY से अपन ने क्या करा, सब यूनिवर्सिटीज आइडेंटिफाई कर ली थी. Z का तो कोई यूज ही नहीं था. सो दैट मीन्स अगर Z क्लू रिमूव हो जाए, स्टिल वी कैन फाइंड दी यूनिवर्सिटीज यूनिकली, है ना? सो दैट मीन्स देयर इज नो यूज ऑफ Z हेयर. दैट मीन्स अगर Z रिमूव भी हो जाएगी तब भी अपन यूनिकली आइडेंटिफाई कर लेंगे. इट विल नॉट प्रिवेंट अस टू आइडेंटिफाई दी यूनिवर्सिटीज फ्रॉम दीज लाइन ग्राफ्स, है ना? सो दैट मीन्स Z इज नॉट रिक्वायर्ड. So we can easily remove Z, है ना? So which of the following information, if removed, will not prevent us from identifying the five university? That is Z only. Okay. So I hope this is clear to you. So we'll meet in the next season with new set of from Z22. Okay. Thank you.